लेकिन क्विकली राज भट्ट साहब के पास भी जाते हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इलारा कैपिटल के वाइस चेयरमैन हैं। राज, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ पे हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप हमारे साथ कहाँ से बात कर रहे हैं, मुंबई से कि लंदन से? नहीं, करंटली मैं मुंबई में हूँ। ओह, शानदार, बहुत बढ़िया। राज, पहले हमें आप एक बार, जो आप बहुत सारी हैट्स पहनते हैं मुझे पता है, लेकिन आप एक बार एफआईआई हैट पहन के मुझे बताएं कि ये जो आपका सर्कल है एफआईआईज का, जो ज़बरदस्त अक्टूबर से सेलिंग चालू है, $20 बिलियन की सेलिंग हो चुकी है, जीएफसी को भी पार कर गई है ये सेलिंग, ये कब तक चलेगी आपके हिसाब से? जो सेलिंग है, इट इज नथिंग टू डू विद इंडिया अलोन। ये सब क्या है, इमर्जिंग मार्केट्स आर बीइंग सोल्ड ऑफ। लोग जब भी कोई रिस्क आता है तो दे वांट टू मनी बैक द सेफ हेवन। So it's a liquidation because of Ukraine risk, now geopolitical risk. That's the main reason, all these sell. And of course, US also going through some kind of turmoil financial market, but that has taken a back seat now. So Ukraine is in the forefront. And आज हमने देखा था Chinese stocks में selling आई इतनी heavy, so I think it's not over. We will see many more turns. तो जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा तो स्टॉक टुडे द चाइनीज स्टॉक्स हैड अ मेजर फॉल, एंड पीपल आर ऑब्वियसली दे आर सेलिंग बिकॉज दे थिंक चाइना इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड। सो यही रीजन है एफआईआई का इमर्जिंग मार्केट्स को बेचने का, और मेरे ख्याल से इंडिया ही नहीं, सारी इमर्जिंग मार्केट्स में ऑल एफआईआई आर सेलिंग एंड दे विल कंटिन्यू टू सेल अनलेस वी सी सम स्टेबिलिटी ऑन यूक्रेन। राइट राज, एक और, हालांकि हम लोग इस मुद्दे के ऊपर 1-2 दिन लेट बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी नज़र जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स पे भी डोमेस्टिक काफ़ी क्लोजली रहती है। जिस हिसाब से बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया यूपी में ही नहीं, आपके क्षेत्र में भी, आपके होम स्टेट में ज़बरदस्त जीत हासिल की, गोवा में की, ये किसी तरह आपको लगता है कि एक ये दिखा रहा है कि मोमेंटम बरकरार है और शायद ये मोमेंटम काम आएगा 2024 में भी? मोमेंटम ऑब्वियसली बरकरार है, काम आएगा। इफ वी डिड नॉट हैव दिस यूक्रेन सिचुएशन टुडे, मार्केट्स वुड हैव टेकन दिस एक्सट्रीमली पॉजिटिव मूव एंड दे वुड हैव मूव्ड अप, सिग्निफिकेंटली। बट जो यूक्रेन की इवेंट चल रही है, दैट इज ओवरटेकन ऑल काइंड ऑफ न्यूज़ एंड इट इज इवॉल्विंग रैपिडली। मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आज चाइना में मेजर सेलिंग आई है, that is not indicating that it is settling down, and there could be spillover. The market is fearful. Oil is so volatile, but hopefully, once we find solution for Ukraine problem, all these then domestic things will add up. But right now, I think Ukraine is the center stage. उसके बाद Fed का, how Fed is going to do. इतनी problem US में है, people are questioning. इतनी liquidity, Fed balance sheet, उसके बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग को क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में जाएगी तो क्या होगा? आई थिंक वहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, बट वी आर लकी दैट अभी यूक्रेन है तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट फेड सो मच नाउ, बट दैट इश्यू विल कम बैक अगेन कि व्हाट इज फेड गोइंग टू डू? आर दे गोइंग टू स्टार्ट stop, and they said they're going to stop quantitative easing anyway, but are they start reducing their balance sheet, which is about $9 trillion today, which is just unprecedented. Yes. All right. बिल्कुल. Good afternoon, Mr. Bhatt. Welcome to ET Now Swadesh. This is Priyanka here. आज जिस तरह से हम दो बड़े सिनेरियोज आप बता रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कहीं वो थोड़ी बहुत जिस तरह से बातचीत का दौर चल रहा है, वहाँ शायद एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस वहाँ से ये बात भी निकल कर आ रही है। दूसरा, फेड अगर 25 बेसिस पॉइंट हाइक करता है, जो बहुत हद तक बाजार ने प्राइस इन कर लिया है, अगर सिर्फ यही निकल कर आता है, क्योंकि ये हफ्ता बहुत क्रूशल रहेगा, तो आपको क्या लगता है यहाँ से मार्केट उस बात को चीयर करेगी? क्योंकि ऑलरेडी 6 टाइम्स में नहीं, 4 टाइम रेट हाइक, 25 बेसिस पॉइंट, इस तरह की बहुत सारी बातें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और जो काफ़ी हद तक बाजार में प्राइस इन है। आप क्या मान रहे हैं, कितना प्राइस इन है बाजार में फेड का रेट हाइक? देखिए, 25 basis point, if it happens, most likely it'll happen. It is not an event because market is already priced in, and 25 basis hikes are already also priced in the market. I think market's main worry is the Fed behind the curve, because your inflation is running so high. It is running 7%, 6%, 8%. Those numbers we have never seen. So
I think we need to see where the inflation trend is. अगर inflation इस तरह maintain रहता है, तो obviously Fed is behind the curve. They are already behind the curve. So वो uncertainty अभी क्या है? Because liquidity इतनी market में कोई सोचना ही चाहता है. Nobody, everybody discounting, But they have to face the situation कि इतना how do you tackle the inflation? या कैसे कमाए? पहले तो उन्होंने कहा ये transitory है. अब यूक्रेन की वॉर की वजह से इन्फ्लेशन हो गया. एंड उसके बाद आई डोंट नो वेज इन्फ्लेशन यूएस में इतना हाई है, हाउसिंग इन्फ्लेशन है, तो ये सब कैसे, ये भी इशू आएगा फेड के बाद इन्फ्लेशन का. सो बिकॉज ऑफ यूक्रेन नाउ दीज थिंग्स आर नॉट नॉट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो इंटरेस्ट हाइक्स का है, 5-6 इंटरेस्ट हाइक्स आर नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिकॉज दे आर प्राइस्ड इन द मार्केट. बट आई थिंक इन द इन्फ्लेशन परसिस्ट, वी कैन सी significant hawkish Fed, and that might destabilize the market. Then we also have the problem जो हमारे यहाँ जो flattening of yield curve है US के अंदर, जो 2-year treasury और 10-year treasury, we have roughly 40 basis point difference between the two. We call yield curve is flattening, and most likely it'll go inverted yield curve, we'll see, and that means the recession. So there is a lot of uncertainty, but nobody wants to accept it today because there's always, excuse to find some reason for inflation. So my worry is that inflation will probably demonstrate the Fed is behind the curve, and they might be more hawkish than this 5-6 times rate hikes of 150 basis, 125 basis points. राज, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय आपको बाजार में कहाँ पे अच्छी वैल्यू नजर आती है? ट्रिगर भले यूएस यूक्रेन इशू रहा हो, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने बात की थी और अब बात कर रहे हैं, बाजार अच्छा खासा करेक्ट हो गया है. फॉरवर्ड अर्निंग्स पे भी करेक्ट हो गया, 22-23 टाइम वाला 18.5 आ गया, ट्रेलिंग अर्निंग्स से भी करेक्ट हो गया. तो कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको अट्रैक्टिव लगता है एज अ थीम? कुछ थीम्स अगर शेयर कर सकते हैं तो. देखिए, इंडिया हैज सॉलिड फंडामेंटल्स, नो डाउट अबाउट इट. क्योंकि हमने जिस तरह से हमने कोविड मैनेज किया, जिससे इकोनॉमी मैनेज की, सो बारिंग अनफोर्सिन थिंग्स व्हिच कुड बी oil shocks and all that, I think India is in a very strong footing. So because of the correction in Western market, we can see correction here also. But हम जो sectors में, metals, I think are the sector which will continue to outperform because we have still mismatch between demand and supply. And also the जो trade opening up sectors हैं, hotels, all the जो COVID is now probably hopefully behind us. So उन sectors में बहुत तेजी आएगी, food and hotels, tourism related sectors. And another sector which I like is the banking, the banking and financials. I think they have also corrected, and we are going to see good GDP growth, 8 to 10%. They always tend to gain more. So these are sectors I think we would prefer. And we also like defensive sectors which are, undervalued in the market, which are cash generative, dividend yielding stocks. We still have many in India. So it's going to be, I think, stock selection game as opposed to overall index game. राइट मिस्टर भट्ट, आज जिस तरह की मूव हम बैंकिंग स्टॉक्स पर देख रहे हैं, स्टॉक लाइक, और बहुत हद तक जो FIIs के फेवरेबल स्टॉक्स भी रहते हैं, HDFC बैंक को आप मूव देके, भले उनके पास एक न्यूज़ का ट्रिगर हो, लेकिन आपको लगता है कि अब जब क्लियर होंगी, क्योंकि बाजार को क्लैरिटी चाहिए, अगर कंफ्यूजन नहीं होगी, फेड रेट हाइक्स जो भी करता है इस हफ्ते वो क्लैरिटी आ जाएगी, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ से ईज आउट हो जाती है, तो FIIs कैन ऑल्सो कम बैक टू इंडियन मार्केट्स. क्या आप ऐसा सिनेरियो देखते हैं? क्या ऐसी एंटिसिपेशन आप कर रहे हैं, या फिर वुड यू हैव अनदर thesis to prove this? I think FI will take time to come back because they don't switch on and switch off, But I have no doubts that 1 or 2 years time, FIs will be missing India, because our fundamentals are so strong in the emerging markets. So we will see renewed interest, but it's not going to be quickly because right now they want their money back because they want safe havens because geopolitical risk. But they'll come back. I'm 100% sure, because the Fed rate hike to a large extent, is not going to impact India. It will, of course, in terms of they find alternate investments in US in the Treasury as opposed to equities. But I think what market is pricing 125 basis point. If that happens, that's not going to significantly change the outlook for India. I think what is very important for FI is that we don't have this geopolitical tension gets resolved, and that's the main reason we have seen selling. And as I'm repeatedly saying that nobody's talking about China today. Such a major correction in China in the large caps.
you know. So that's not a good sign, you know. Obviously, the selling there also, the FIIs have been selling there also. Yeah. Right, of course, FIIs are selling in all another emerging markets also, और वो clearly इंडिया में भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आज आपको हांगकांग में भी चाइनीज लिस्टेड स्टॉक्स में भी आपको एक अच्छी सेल ऑफ देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर भट्ट, इलारा कैपिटल से आज हमारे साथ बने हुए और हमें अपनी मार्केट पर आउटलुक, मैक्रो फ्रंट पर अपना आउटलुक और FIIs की एक्टिविटी पर, पॉसिबल एक्टिविटी पर भी अपना व्यू हमसे शेयर कर